हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं रिव्यू करूंगी एक और पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम है प्राइमरी स्किन केयर। दे डोंट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स बाय देमसेल्फ बट दे आउटसोर्स द प्रोडक्शन एंड देन सेल दिस प्रोडक्ट्स अंडर द लेबल ऑफ प्राइमरी स्किन केयर। और एक और बात जो मुझे इस ब्रांड के बारे में पता चली वो ये कि इट्स अ टोटली वुमन रन बिजनेस विद नो मेल एम्प्लॉयज। सो थम्स अप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इनके सारे प्रोडक्ट्स क्रूएल्टी फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं एंड दे आर आल्सो फ्री ऑफ phthalates। इस ब्रांड के टोटल 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अ मॉइस्चराइजर, अ टोनर एंड अ मिस्ट। So I'm gonna check all the ingredients of these products and then I'm going to give review based on the ingredients. So I have my notes here and let's start with the first product which is their barrier repair moisturizer। इस moisturizer की प्राइस 1800 रुपये है और इसके अंदर आपको 50 ml की ट्यूब मिलेगी जिसको आपने 12 मंथ के अंदर यूज करना है आफ्टर ओपनिंग द सील। एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इट्स अ वेरी नरिशिंग moisturizer फॉर सेंसिटिव, सेंसिटाइज्ड एंड ड्राई स्किन एंड ऑल्सो फॉर एक्जिमा स्किन। इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, एसेंशियल ऑयल फ्री, अल्कोहल फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, which means it's suitable for sensitive and acne prone skin as well. Now let's check the ingredient list. First we have water, pretty basic, and then we have glycerin. It's a hydrating agent, very good for your skin. Next we have shea butter. Shea butter is an emollient और इसको cosmetics में यूज किया जाता है because of its skin smoothing properties. It has a very rich texture and it's a very good source for antioxidants and fatty acids. So it's a very good ingredient for skin, especially for dry skin. इसके अलावा इसमें है jojoba oil, another emollient, and it's a non-fragrant oil. हमारी स्किन जो नेचुरली सीबम प्रोड्यूस करती है, jojoba oil का टेक्सचर उससे मिलता जुलता होता है, so it's suitable for all skin types. और ये आपको स्किन सूदिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें है ऑर्गन ऑयल, अनदर गुड इमोलिएंट एंड इट्स आल्सो अ नॉन फ्रेग्रेंट ऑयल। एंड देन वी हैव नाइसिनामाइड, ग्रेट इंग्रेडिएंट। नाइसिनामाइड ऑयल और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स विद स्किन टेक्सचर और ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है। अनदर अमेजिंग इंग्रेडिएंट विच इज प्रेजेंट इन दिस मॉइस्चराइजर इज सोडियम PCA, सोडियम पेरोलिडोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंपाउंड नेचुरली हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है एंड इट्स अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग एजेंट। एंड देन वी हैव सिरामाइड्स इन दिस मॉइस्चराइजर। हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सिरामाइड्स से बनता है और हमारी स्किन की आउटर लेयर से वाटर लॉस को कंट्रोल करने में सिरामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। दैट्स व्हाई हैविंग सिरामाइड्स इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। और हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सिरामाइड्स मौजूद होते हैं। आई थिंक देयर आर मोर देन 6 टाइप्स ऑफ सिरामाइड्स। इस प्रोडक्ट के अंदर 3 टाइप के सिरामाइड्स ऐड किए गए हैं, सिरामाइड 3, 6 and 1। नेक्स्ट वी हैव विटामिन ई इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। ये भी नेचुरली हमारी स्किन में पाया जाता है लेकिन कांस्टेंट सन एक्सपोजर की वजह से इसकी मिकदार में कमी आ जाती है। सो इट्स वेरी गुड टू हैव विटामिन ई इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स और विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट वी हैव पैंथेनॉल। इसको प्रोविटामिन B5 भी कहा जाता है और इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज किया जाता है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉइस्चर। इट कैन इम्प्रूव द लुक एंड फील ऑफ योर स्किन। नेक्स्ट वी हैव एलेंटॉइन। इट्स अ स्किन सूदिंग एंड कंडीशनिंग एजेंट। ये भी नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद होता है एंड it's a product of uric acid. My overall opinion is it's a great moisturizer, great ingredients, suitable for normal, combination, dry skin, sensitive skin, acne prone skin, skin with rosacea. But for oily skin हो सकता है कि ये थोड़ा thick feel हो because it has very heavy emollients like shea butter, jojoba oil, argan oil. If you have oily skin, I think it can make your skin look a bit greasy, but it also depends on the formulation and the amount of these emollients in the formula. Second product from the primary skincare is their glow toner. इसकी प्राइस है 1400 रुपये and you will get 120 ml of this product in the packaging. सबसे पहले चेक करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। So it combines powerful botanical extracts such as aloe, chamomile and lavender with a gentle concentration of 3% glycolic acid which works together to deep clean pores, encourage skin renewal and smooth fine lines. So it's an exfoliation toner. Let's have a look at the ingredient list. First we have water and then glycerin. Glycerin is a hydrating agent as you guys know, and then we have sodium hyaluronate which is a humectant. ये पानी को, moisture को attract करता है और आपकी skin को hydrate करता है। And next we have 3% glycolic acid. Glycolic acid is an alpha hydroxy acid also known as AHA and it's an exfoliant.
ये आपकी स्किन की टॉप लेयर्स से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है ताकि आपकी स्किन रिन्यू कर सके और नई स्किन ग्रो कर सके. नाउ द थिंग विद ग्लाइकोलिक एसिड इज दैट इट हैज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट among all AHAs. It is very strong, it's very fast, and it can penetrate deep into your skin, and it can trigger your melanocyte cells. Now you can use glycolic acid because it's only 3% in concentration, but the problem occurs when you overuse it, and if you overuse it then you can trigger your melanocyte cells and it can lead to hyperpigmentation. My suggestion is that if you can avoid using glycolic acid, please do. You can definitely use the products with lactic acid or mandelic acid for exfoliation. Those two are more suitable for skin of color, and those two are a bit gentle compared to glycolic acid. But if you still want to use this AHA, glycolic acid, then please don't use it every day. The last thing that you want to do is to trigger your melanocyte cells and to get more pigmentation and dark skin. Moving on to the next ingredient, which is lavender oil, and it's a potential skin sensitizer because of its fragrance component. And it has also shown in research that lavender oil can have damaging effects on your skin in as low concentration as 0.2%. Lavender oil can also oxidize in air, which means it can cause some serious reactions on your skin. Next we have aloe vera gel in the ingredient list, and it's a natural humectant. ये बहुत ही soothing और hydrating होता है आपकी skin के लिए. After aloe vera gel, it has witch hazel extract, और witch hazel extract को इसकी antioxidant properties और skin soothing properties की वजह से जाना जाता है, but it can also sensitize your skin. Witch hazel also has some astringent properties, which means it can dry out the natural oil of your skin. Next इसके अंदर है bitter orange extract. Now bitter orange extract is very good for its antioxidant properties when you eat it, but not topically, because इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट मेंथोल की भी मौजूद होती है, which is a potential skin sensitizer. इसके बाद इसमें है rose flower extract. Now this is a good one and it's a skin conditioning agent. Another good thing which is present in this toner is chamomile flower extract, which is a moderate antioxidant, and it's also known for its skin conditioning properties. And lastly it has mint extract, which is a natural astringent, means it's going to dry your skin, and it's also a skin sensitizer. My overall opinion is not recommended. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर देंगे, और सेकेंडली इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं. स्पेशली इट्स नॉट सुटेबल फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, एंड आल्सो इफ यू आर एलर्जिक टू फ्रेग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल. पीपल विद ऑयली स्किन कैन गिव इट अ ट्राई, बट ओनली यूज इट एवरी अदर डे, नॉट डेली. थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्किन केयर इज देयर जैस्मिन ड्यू फेस मिस्ट. इसकी प्राइस है 990 रुपये, एंड यू विल गेट 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट इन द पैकेजिंग. डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये प्रोडक्ट ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए है, एंड इट हाइड्रेट, रिफ्रेश एंड काम योर स्किन. इस फेस मिस्ट के अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम हैं जो टोनर के अंदर भी थे, लाइक एलोवेरा जेल, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, और उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है, तो उन्हें दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी. इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले है ग्लिसरीन, विच इज वेरी गुड, एंड देन इट हैज hyaluronic acid and sodium hyaluronate. Both are humectants and they are very hydrating for your skin. Then it has jasmine extract, which is a fragrant oil, और इसको अक्सर परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, so it's a potential skin sensitizer. इसके बाद इसमें है green tea extract. Now this one is a very good ingredient. Green tea के अंदर कुछ polyphenols होते हैं that are potent antioxidants, and they also have skin soothing properties. Green tea extract can also show some significant improvement in the appearance of sun damaged skin, but my overall opinion is not recommended, especially for dry and sensitive skin, because it has jasmine extract, which is a fragrance, and it has witch hazel extract, it has orange extract, so avoid it. My overall opinion about primary skincare is that I love the transparency of the brand and the fact that they're sharing all the information with their customers. I totally recommend their barrier repair moisturizer, and I'll definitely want to try it out for myself if I got the chance, because I also have dry skin, but I don't recommend their toner and the face mist. And lastly, I would love to see more products from this brand in future, especially a mineral sunscreen for skin of color. So that was all for today's video. I hope you guys liked it. Give it a thumbs up, share it with friends, follow me on Instagram, subscribe if you're new here, and I'll see you guys in the next video. Bye.